हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बतलाऊंगी टू अ लोकोमोटिव इन अ विंटर का क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे लिखना है। इस लेक्चर को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। पहले मैं आपको इंग्लिश में बतला दूंगी, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगी इस पोएम के बारे में, ताकि आप अच्छे से लिख सकें। Walt Whitman was one of the most famous poets of American literature. He is often called as father of free verse. His poem To A Locomotive in Winter also reflects modernity and technological changes. This poem is basically a love song written in praise of a train. He considers the dynamic relationship between nature and train. Modernity and technological changes find a great space you can say, in Whitman's poem. He composed this poem as a love song of an early train. The poem begins with the line "Thee for my recitative" that gives form to the train as a symbol. Means the train is a symbol. The train is symbol of modernity. The train is a symbol of technology. Not only this train is also a symbol of hard work. How this train works even in worst weather. It keep on working irrespective of weather and season. In the first half of the poem, mechanical sound and images of train is described. The beauty and the strength of train is portrayed by the use of imagery in the poem. The Whitman displayed the majestic display of locomotive. The whole movement of train is captured by the poet. Whitman says that the train can be seen from distance and it looks narrow at the back. It has a headlight fixed in the front as we have eye. The poet says that the train has compartments and these compartments are following engine happily as a student follow his master. He says, these are lines from the poem, "Thy train of cars behind, obedient merrily following." The poet addresses the train and says to become his poetic inspiration so that the reader can imagine it and can realize the grand movement of train automatically. He further says that the train used to convey signal through lamp, which is silent signal that whether route is clear or not. It whistle as a man is laughing. It rumble like earthquake, that is the sudden movement of train is equated with the earthquake. Poet addresses train as a living entity. Further, poet says when locomotive passes through rocks and hills, it shrinks and sounds returns to listener by echo. This road is not only laid in hills but also laid across prairies and lakes, and the free spirit of train is everywhere strongly and gladly. Thus, the readers of the poem can conclude that To A Locomotive in a Winter handles modernity and technology changes beautifully. It's a love song written in a praise of train. Whitman praises train for the work it is doing, working diligently without fatigue and working no matter the time of the day and environmental condition. That is, it continues to work irrespective of weather. It has its own governing laws and principles. Whitman's train is a train formed into a living entity by natural forces that embody it. The poet is requesting to train to become his muse so that the readers can realize the grand moment of train automatically through poet's word. For instance, he says, "For once come, serve the muse and merge in verse, even as here I see thee."
unquote. Here, poet uses train as a symbol to talk about new technology. Through this poem, he tries to convey the message also that people should be united and work together to improve as locomotive work on its journey. According to poets, one should take inspiration from this train, this locomotive. One should inspired from these trains, how these trains works. One should also be inspired and works. Apart from all this, living imagery of train is well depicted by a poet. For instance, quote unquote, thy madly whistle laughter, unquote. Whitman uses Old English and free verses without following any rules. That is, free verse style is used to represent the free movement of locomotive. This can also be a symbol of freedom of people from tradition. That's all. You can write a good critical appreciation with the help of this lecture. Now I will explain in Hindi. ये जो पोएम है वो ट्रेन के बारे में है। ये जो पोएम है उसको ट्रेन का प्रेज करते हुए, ट्रेन के प्रशंसा में जो वॉल्ट विटमैन है वो इस पोएम को लिखे हैं। ये जो पोएम है वो एक लव सॉन्ग है अर्ली ट्रेन का। इस पोएम में विटमैन ने मैकेनिकल साउंड और इमेजेस का भी यूज किया है, उसे भी डिस्क्राइब किया है। विटमैन कहते हैं कि जब हम ट्रेन को दूर से देखते हैं, उसके दूर वाला जो पोर्शन होता है वो हमें नैरो दिखाई देता है, और जो सामने वाला पोर्शन होता है जो हमारे नज़दीक होता है वो वाइड होता है, कि चौड़ा होता है सामने वाला, और पीछे वाला जो है वो नैरो होता है। वो इसके अलावा बोलते हैं कि ये जो ट्रेन है इसके पास एक हेडलाइट होता है। जैसे हमारे पास आगे में हमारे पास 2 आइज़ है, वैसे इसके पास हेडलाइट है जो जलते रहता है। आई होप कि आप लोगों ने भी देखा होगा। वो कहते हैं जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है वो इंजन को इस तरह से फॉलो करता है जैसे एक ओबीडियंट स्टूडेंट अपने मास्टर को फॉलो करता है। जो विटमैन है वो ट्रेन को एड्रेस करते हैं, उससे बोलते हैं कि वो पोएटिक इंस्पिरेशन बन जाए, ताकि जो रीडर है, जो पाठक है, वो ट्रेन को इमेजिन कर सके ऑटोमेटिकली। वो कहते हैं जो ट्रेन है वो सिग्नल कन्वे करता है लैंप से कि रास्ता क्लियर है या नहीं। जो लैंप है वो साइलेंट सिग्नल होता है जो बोलता है कि जो रूट है वो क्लियर है या नहीं है। और जो ट्रेन है वो उसकी जब सीटी बजती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई हंस रहा है। इसके बाद जो विटमैन है वो ट्रेन के मूवमेंट को अर्थक्वेक के मूवमेंट से तुलना करते हैं, उसको उसके साथ इक्वेट करते हैं, दोनों को एक समान बतलाते हैं, दोनों का समानता करते हैं। पोएट ट्रेन को लिविंग एंटिटी के जैसे एड्रेस करते हैं, ट्रीट करते हैं। जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि जो उसका सिटी है जब वो विसल करता है तो उसे कहते हैं जैसे कोई आदमी है वो हंस रहा है। इसके बाद वो ट्रेन के विस्तार के बारे में बात करते हैं कि वो कहाँ तक फैला हुआ है। रॉक्स, हिल्स, सभी जगह से ट्रेन जो है वो पास होते हैं। वो फ्री स्पिरिट ऑफ ट्रेन की बात करते हैं जो सभी जगह है, स्ट्रांगली एंड ग्लैडली। वो कहते हैं जो ट्रेन है उसका अपना लॉ एंड ऑर्डर होता है, ट्रेन अपने हिसाब से चलता है। वो जो ट्रेन है वो किसी और के लॉ ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। वो जो है किसी भी वेदर में, कैसा भी मौसम हो, वो चलते रहता है, अपने रुकता नहीं है। वो ट्रेन के स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को यहाँ दिखलाया गया है कि कैसे वो लगातार काम करते रहते हैं। ट्रेन कैसे लगातार काम करते रहता है। ये जो ट्रेन है वो मॉडर्निटी और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को भी दिखलाता है, और विटमैन ने यहाँ फ्री वॉइस का यूज किया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।